As a Pakistani, I wish you all the best for this project to Turkish peoples and Turkish government and Tayyip Erdogan. And I pray they will complete this project for the betterment of Turkey and his people. Welcome to MunirAlive Reactions. My name is MunirAlive and I am a Pakistani. आज मैं जिस वीडियो का रिएक्शन और रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है तुर्की से रिलेटेड और तुर्की का बिगेस्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट. टाइटल नेम इज तुर्कीज प्लान फॉर अ $20 बिलियन इस्तांबुल कैनाल. अब काफ़ी लोग सोचेंगे ये क्या चीज़ है, किस किस्म की कैनाल है. तो इस वीडियो में यही इसलिए मैंने ये वीडियो चूज़ की ताकि जिनको नहीं पता ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को और इंडियंस को कि ये कैनाल सिस्टम क्या है, इस्तांबुल कैनाल सिस्टम क्या है, तो इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा. काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है. आई थिंक तुर्की का सबसे ये बिगेस्ट प्रोजेक्ट होगा तुर्की की हिस्ट्री का. जब से वो ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गए, एक आज़ाद तुर्की वजूद में आया, उसके बाद से अब तक का बिगेस्ट हिस्ट्री में उनका ये प्रोजेक्ट होगा, जिनकी वजह से आई थिंक तुर्की की इकोनॉमी की सारी उम्मीदें इसी सिस्टम से है. मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में आई थिंक पता लग जाएगी और उसके बाद मैं अपना रिएक्शन और रिव्यू दूंगा. तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को पहले देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद मैं अपना रिएक्शन और रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा. Istanbul is the heart of Turkey. It hosts 15 million people, nearly 1/5 of the country's population. It is the economic capital of Turkey, the cultural center, and the country's top tourist destination. This prominence is largely the result of its strategic position along the Bosphorus Strait, a major trade route that cuts right through the city, splitting Europe from Asia while linking the Mediterranean and Black Seas. Every year, around 48,000 vessels transit the strait, making it one of the busiest maritime passages in the world. Despite this, Turkey benefits very minimally from the strait. In 1936, Turkey and a list of other European countries signed the Montreux Convention, which gave Turkey control over the Bosphorus Strait. However, it also guaranteed free passage for civilian vessels during times of peace and severely restricted the passage of military vessels not belonging to Black Sea states. As a result, nowadays, Turkey collects zero revenue from the strait, and naval vessels from countries such as the US are largely prohibited from entering the Black Sea. Meanwhile, the Bosphorus Strait is getting congested. What if, instead of waiting hours to pass the Bosphorus Strait, ships could quickly pass through a new man-made canal across Istanbul, which would earn toll revenue and bypass the Montreux Convention? Well, this idea has existed for centuries. In the 1500s, an Istanbul Canal was first proposed by Ottoman Sultan Süleyman I before being abandoned. Over the next 3 centuries, numerous other sultans attempted to resume the project, with no success. In the 1980s and 90s, numerous Turkish politicians reintroduced the proposal. However, with not nearly enough shipping traffic, the idea was dismissed. Then, in 2009, rumors surfaced that Prime Minister Recep Tayyip Erdogan was planning the largest project in Istanbul's history. In April 2009, pre-feasibility studies began, and finally, in 2011, Erdogan publicly announced his project, the Istanbul Canal. In 2012, feasibility studies began. Over the next few years, the project was researched, the canal route was chosen, and the project received environmental approval. Then, in March 2021, the Turkish government approved the canal development plans, finally enabling construction to begin. The Istanbul Canal is planned to be 45 kilometers long, sitting 30 kilometers west of the Bosphorus Strait. In comparison, the Panama Canal is 82 kilometers long. It would start at the Sea of Marmara before crossing the Küçükçekmece Lagoon, connecting to the Sazlıdere Barrage Reservoir, and traversing 17 kilometers north to the Black Sea. The canal would be 360 meters wide at the surface and 275 meters wide at the bottom, with a depth of 21 meters, about the same as the Suez Canal. This is deep enough for most cargo ships except the largest supertankers and supercontainers. Eventually, Turkey hopes the canal would accommodate 130 to 160 ships a day, around the current daily traffic of the Bosphorus. The Istanbul Canal would be the centerpiece of an even larger development project.
Surrounding the canal would be residential and commercial developments, which would host approximately 500,000 people. These would be linked by 3 underground tunnels, along with 6 bridges across the canal. These bridges would have vertical clearances high enough for the largest ships and would cost another $1.4 billion. In addition, there would be a new container port, numerous marinas, and reclaimed land along the Sea of Marmara. Lastly, the canal would integrate with Istanbul's new $12 billion international airport and its new Otoyol 7 motorway to form a major international logistics hub northwest of the city. Further out, the project is part of a nationwide infrastructure boom meant to propel Turkey's economy as part of its Vision 2023 program. According to the Turkish government, the Istanbul Canal would cost around $15 billion and take 7 years to construct. If completed, it would provide some major benefits for Turkey. First of all, it would relieve congestion in the Bosphorus Strait. Currently, ships have to wait an average of 14 hours to enter the Black Sea, resulting in massive queues off the coast. The canal would clear up this congestion, improving international trade, decreasing the risk of shipping accidents, and lowering pollution in Istanbul. In addition, the canal would divert dangerous cargo away from Istanbul's city center. As shown by the 2020 Beirut explosion, having dangerous cargo near cities is a recipe for disaster. Moreover, the canal construction would create an estimated 8,000 to 10,000 jobs, boosting the country's construction industry. Most importantly, though, the canal would allow Turkey to bypass the Montreux Convention. If it wanted, Turkey would be able to let foreign naval vessels into the Black Sea, and it would be allowed to charge tolls. Eventually, the Turkish government believes the canal could generate around $8 billion in annual revenue. Despite all this, the Istanbul Canal is very controversial. Its construction would displace thousands of people while affecting the livelihoods of up to 1 million. In addition, it would result in environmental damage and potential damage to archaeological sites. Moreover, the canal would disrupt the city's already strained water supply. It would completely uproot the Sazlıdere Barrage reservoir and would likely contaminate underground water tables and streams. Furthermore, by establishing a second link between the Mediterranean and Black Seas, it could disrupt the flow between them. Oceanographers warn that the canal could result in a massive inflow of organisms into the Sea of Marmara, leading to the death of marine life and a terrible smell around Istanbul. Because of all this, the project has largely been opposed by the citizens of Istanbul. According to a 2020 poll, 80% of Istanbul citizens oppose the project. Even more, since the canal would enable large US and NATO warships to enter the Black Sea, it has drawn opposition from Russia, who claims it violates the Montreux Convention and would undermine its national security. If the canal is built, it could strain Turkish-Russian relations while disrupting stability in the Black Sea. Because of this, in April 2021, 104 former Turkish naval officials signed an open letter against the canal. The day after, 10 were arrested. Lastly, many doubt the project would work. While the canal would bypass the Montreux Convention, it would not revoke it. Ships would still be guaranteed free passage through the Bosphorus Strait, and therefore most would still use it. Turkey hopes that the appeal of a traffic-free fast lane would be enough to get some ships to move over and pay. However, it's feared that ships would not do this, and would simply wait to use the Bosphorus instead. Nevertheless, President Erdogan is committed to the project. Tenders are to be held soon, and construction on the canal's first bridge is planned to begin in June 2021. If the project is finally realized, it will transform the landscape of Istanbul. It would relieve congestion from the Bosphorus Strait and earn revenue, but would also displace thousands of people and potentially damage Istanbul's water supply while disrupting the region's stability. What do you think? Is the Istanbul Canal a good idea? तो ये थी पूरी तफसील तुर्की का जो प्लान है एक नई इस्तांबुल कनाल बनाने का। $20 बिलियन का ये पूरा प्रोजेक्ट है। रेवेन्यू इसमें से क्रिएट होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स है क्योंकि ये आज का प्लान नहीं है, ये बहुत सालों सदियों पहले का ये प्लान कभी ना कभी तुर्की के जहन में आता है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। लेकिन बाकी जो उन्होंने बताया कि 1936 के एक मुआहदे की वजह से जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई तो उसकी वजह से ये अपनी जो कनाल जो इस्तांबुल से गुज़रती है ब्लैक सी के
रास्ता है जो उससे टैक्स नहीं कलेक्ट करती और इसलिए इसको कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो इसलिए ये नई कनाल बनाने लगे ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो उनका है बाकी कंट्रीज से वो भी ना मुतासर और नई कनाल बनाए, और जो वहाँ से गुजरना चाहता है तो उससे वो रेवेन्यू इकट्ठा कर सके। तो अगर ये प्लान इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये तुर्की की हिस्ट्री का सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट होगा, और इससे उनको उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा ये अपना रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं पर ईयर, जो कि आज तक तुर्की ने इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं किया होगा किसी और भी प्रोजेक्ट से जो वो इस प्रोजेक्ट से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया इसके ख़िलाफ़ भी है, तुर्की के अंदर भी लोग ख़िलाफ़ है, लेकिन जो कि इस वक्त पॉपुलैरिटी है तैयब उर्दगान की तुर्की के अंदर, तो वो उम्मीद है कि वो ये प्रोजेक्ट लाजमी क्रिएट करवा लेंगे। तो इसलिए बाकी देखते हैं कि क्रिएट होने के बाद क्या फ़ायदा होता है क्या नहीं होता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंट्री या तुर्की के सिटीजन्स इनको रोक सकते हैं इस प्रोजेक्ट को करने से, क्योंकि इस वक्त तुर्की की जो तैयब उर्दगान की पॉपुलैरिटी है तुर्की के अंदर वो बहुत ज़्यादा ही ऊपर जा चुकी हुई है, जो कि आज तक किसी भी तुर्की की लीडर की नहीं हुई जो इस वक्त तैयब उर्दगान की तुर्की के अंदर पॉपुलैरिटी है। जो रिसेंटली आपने देखा था कि जब आर्मीज़ ने उनके खिलाफ़ बगावत की थी तो वो भी नाकाम हो गई थी, क्योंकि उनकी जो आवाम है वो उनके साथ है और आवाम फ़ौज के सामने आके खड़ी हो गई थी। तो ये पॉपुलैरिटी का इस वक्त दौर उनका चल रहा है, और अगर उन्होंने ये नियत कर लिया कि प्रोजेक्ट बनाना है तो ये लाजमी तौर पे ये प्रोजेक्ट बना लेंगे। सिर्फ उनको मुश्किल अगर ये पेश आएगी तो आएगी कि वो जो खर्चा आएगा उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो कहाँ से ये कलेक्ट करेंगे, कहाँ से वो निकालेंगे इतना ज़्यादा खर्चा, क्योंकि 7 सालों का ये लंबा प्रोजेक्ट है, और उसके बाद जो पानी के मसले हैं, जो दूसरे मसले इसमें बयान किए गए हैं, उनको कैसे रिकवर करेंगे, या सिर्फ ये एक प्रोपेगेंडा है। ये दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि वाटर लेवल ख़राब हो जाएगा और उधर कोई बीमारियां फैल जाएगी और उधर जो है ऑक्सीजन कमी आ जाएगी। तो ये एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। जो तुर्की का पॉइंट ऑफ व्यू होगा उनका गवर्नमेंट का ये होगा कि ये फ़ायदेमंद है तुर्की के लिए। तो जो भी है ये प्रोजेक्ट जो है तुर्की का सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट होगा और वर्ल्ड वाइड भी सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स में ये शुमार होता है अगर ये स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मंजूरी इसकी हो गई हुई है। एज अ पाकिस्तानी आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट टू Turkish peoples and Turkish government and Tayyip Erdogan, and I pray they will complete this project for the betterment of Turkey and his peoples. इसके अलावा जाने से पहले जैसा कि आपको पता है कि MunirAlive रिएक्शंस को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपके नोटिफिकेशंस में आपको मौसूल होती रहें। और अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक इंडियन वीडियो के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन और रिव्यू, तो मुझे इस वीडियो कमेंट्स में लाजमी सजेस्ट कीजिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी दी हुई सजेशन के ऊपर अमल करते हुए अपना रिएक्शन और रिव्यू आपके साथ शेयर